Assalamu alaikum. Today we are going to make a small video on some tips and tricks how to answer your LSM question paper. So for LSM paper, LSM is fairly easy subject. It's considered as an easy subject, yet it is a compulsory subject to pass, which means that if you're not going to make your LSM through, you cannot sit in your next class. So while attempting your LSM paper, you have to understand that 2 out of 4 questions are already been attempted in one way or another. आपको उस सवाल के बारे में कुछ पता है. एक आपका सवाल स्टैचूट पे होता है, एक सवाल आपका केस नोट पे होता है. केस नोट आपने सबमिट अपना करा दिया हुआ है, उसको अपने सामने लाजमी रखें while answering to the questions. एंड जब स्टैचूट की बारी आती है, सो यू हैव योर स्टैचूट नाउ. एंड आई वॉज आस्क्ड बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स स्टैचूट पे किस तरह के सवाल आते हैं. तो स्टैचूट पे आपसे वो हरगिज़ ये नहीं पूछेंगे कि सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 5 क्या कहता है. दे विल क्रिएट सर्टन सिचुएशंस इन विच यू हैव टू अप्लाई द स्टैचूट. सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज़, द लर्निंग आउटकम इज़ दैट you should know how to apply the statute to the given scenarios. So you have to keep your statute in front of you. Next 2 questions are going to be unseen questions. For example, if the question is on judicial precedent, the question is on statutory interpretation. I would like to add so much emphasis on this word that if the question states the word judicial precedent, you don't have to write all answer on judicial precedent. Please focus on the statement. If the statement asks you to discuss, critically analyze something related to judicial precedent, then you have to analyze it as well. Opening statements, closing statements, मैं इतना फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से. मैंने एक और वीडियो में भी ये बात कही थी that you don't have to write fancy statements. It's not a debating competition where you have to impress the examiner by or the audience by your fancy words. You have to literally dive into the question, but you have to answer what has been asked. So ऐसा नहीं होता कि आप all आंसर लिख दें and then you fail and then स्टूडेंट्स कह देते हैं सर हमने तो सही लिखा था, what happened. So स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ चेक करने का एक ग्राफ है. इफ़ यू आर फेलिंग, अगर आपको लगता है इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, इफ़ यू आर फेलिंग on a 32, 34 or a 39, which means that कि आपकी understanding है. If you are failing above 30, it means that आपकी understanding है, you don't know how to apply or write the answer, apply the law, you don't know how to write it all. So LSM and public law, but LSM most particularly is a subject जहाँ पे आपकी writing skills की सारी बात है. So आपने focus करना है अपनी writing skills के ऊपर. Time management is another question. You have to try to write your answers in 45 minutes max. However, if you're not able to write your answers in 45 minutes, I would recommend you that you should एंड पे आपके पास जो टाइम बच जाए उसमें आप अपने एग्ज़ाम्स को, अपने क्वेश्चंस को ज़रूर चेक करें. उससे क्या होता है कि जो आपकी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस टेक्स योर आंसर फ्रॉम a 50 to a 60. I hope this video is going to help you, and just focus on the question. Don't jump into an all answer, and I hope you're going to ace your exams. Good luck.